कि तथाकथित फेमिनिस्ट जो पोजीशन है, ना वो धर्म समझते हैं, ना वो फेमिनिज्म का मर्म समझते हैं, ना वो एक्टिविस्ट का कर्म समझते हैं, और सबसे बड़ी बात है ना वो शर्म समझते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं कि कुरान गलत है जब वो कहती है कि औरतों को कैसे ड्रेस होना चाहिए? कुरान गलत है? नहीं नहीं, कुरान गलत नहीं है। अब क्या हो जाता है? कुरान गलत नहीं है, लेकिन इट इज सो इजी टू एक्सपोज द हिपोक्रेट। नमस्कार दोस्तों, आज का डिबेट ट्रिपल तलाक और सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश को लेकर है, जिसमें लेफ्टिस्ट तृप्ति देसाई के हिपोक्रेसी को जेएसआई दीपक और आनंद रंगनाथन ने बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज किया है। तो आइए देखते हैं। शबरीमाला हो या ट्रिपल तलाक हो, ये महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा था। और मुझे लगता है कि 21वीं सदी में अगर हमारा देश कोई धर्म के ऊपर नहीं चलता है, वो संविधान के ऊपर चलता है, और हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स है तो वो हमें मिलने चाहिए। और इसीलिए टेंपल में जो एंट्री बैन की जाती है वो बिल्कुल गलत है। और वहाँ पे भक्तों को, सभी पुरुष हो या महिला हो, सभी को जो है वो समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ गया। मुझे ऐसा लगता है कि तथाकथित फेमिनिस्ट जो पोजीशन है, ना वो धर्म समझते हैं, ना वो फेमिनिज्म का मर्म समझते हैं, ना वो एक्टिविस्ट का कर्म समझते हैं, और सबसे बड़ी बात है ना वो शर्म समझते हैं। गजब बेइज्जती है। सायरा जी ने अभी जो कहा कि मेंस्ट्रुएशन इम्प्योर नहीं है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा धर्म ये कहता है कि मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल भी इम्प्योर नहीं है। इसीलिए कामाख्या के मंदिर में आज भी साल में एक बार अंबुबाची मेला लगता है, जहाँ पे हम देवी का मेंस्ट्रुएशन सेलिब्रेट करते हैं। इतना ही लेकिन नहीं, शबरीमाला में महिलाएं नहीं जा रही हैं, ये भी आपका ही कहना है। मतलब आप ऐसे बोलते कैसे? ठीक है, ओके, नो यू हैव टू लेट मी कंप्लीट। ठीक है। केरल में अय्यप्पा के लगभग 20,000 मंदिर हैं, उसमें 5 जो मंदिर हैं वो पंचशास्ता कहलाए जाते हैं, वो भी अय्यप्पा के ही मंदिर हैं, और हर मंदिर में भगवान एक ही है, अय्यप्पा ही है। वो 5 मंदिरों में से 4 मंदिरों में कोई भी जा सकता है। सिर्फ शबरीमला एक मंदिर है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अय्यप्पा वहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि उनको ऐसा बिलीफ है, वो बोलते हैं कि उनको एक 10 से 50 की एज में वहाँ स्त्रियों को अलाउड नहीं है। मेरा एक ही बस ये कहना है कि आप अगर अय्यप्पा में विश्वास करती हैं, इफ़ यू आर अ प्रैक्टिसिंग एंड बिलीविंग हिंदू, देन अय्यप्पा इज द सेम इन एनी टेम्पल। तो you go to any of the 19,999 temples of Ayyappa in Kerala, जहाँ पे आपको एंट्री है, जहाँ पे आप जाएं, आप पूजा करें। एक शबरीमला का मंदिर जो है, वहाँ पे भी एंट्री इसलिए नहीं अलाउड है कि स्त्रियाँ इम्प्योर है। ये हमारे शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन मेक्स अ वुमन इम्प्योर। We respect menstruation, we worship menstruation. Sometimes we fear in menstruation because we don't understand it, but we do not consider menstruation as dirty or impure. और ये जो propaganda चलाया जा रहा है कि the whole community is misogynistic, the whole Hindu dharma is misogynistic, ये बस propaganda है और कुछ नहीं है। बस हवा निकल गई। There are 2 ladies Shbarimala in Kerala. I'm sure Tripti Desai ji even won't know the names of those temples. There are 2 ladies Shbarimala where millions of women come, and we men don't participate in that particular Pongala, which is in the Guinness Book of World Record for the largest congregation of women. With due respect, our left liberal feminists, their meetings will have maximum of 200 to 300 people, whereas in Ladies Shbarimala, 30 lakh Hindu women offer Pongala, and not even one male is there. This is only like a male college and a female college. Our puja system, tantric systems are very deep. They are connected to physiology, psychology, spirituality. Second point, what is inside a temple, even though we call it God, the right word is deity. Swami Ayyappa is a deity, Sri Ram is a deity, Skanda is a deity, or Devi is a deity. This deity is not exactly equal to Parabrahma. The deity is a form to or a path to reach Parabrahma, and the ritualistic system in every temple differs. This is the soul of a temple worshipping system. Unfortunately, without knowing anything, I know my friends like Tripti Desai ji always come. We would request her to come to Kerala and visit Lady Shbarimala, but she will never come because she wants to create an issue, she wants to create a controversy, she wants to create a problem.
So Tripti Desai ji will never want to, it is, and I would like to end by saying, it is simply like me going to a lady college and saying that, why can't I get admission here? If I am not having admission, it is against the right to education. I am being discriminated. So other people will say, Bhaiya, tumhare liye college hai. No. I want to study in a girls' college amidst the girls itself. Then only my right to education is fulfilled. This kind of logic is being applied without context. I hope, please come to Lady Sabarimala. We will celebrate you, touch your feet, do the Nari Puja. But please spare our believers and Hindu rights. And please don't make a mess of our temple. That's the only request I have. So I'd like to actually thank Saira ji for being very blunt that all faiths need reform. I don't know if all faiths need reform, but I'm happy for the admission that some faiths certainly need reform. समझ रहे हो आप समझ रहे हो? You want to respect sentiments, then respect sentiments across the board and not selectively. Second, whenever you bring in tradition is always going to be at loggerheads with modernity. But most importantly, a traditional place such as a place of worship cannot be expected to kowtow to the whims and fancies of modernity. Its loyalty is only to tradition, and tradition alone. Since we are all, I'm assuming we are all constitutional patriots, that seems to be the buzzword. The Constitution, from its origin, recognizes that one, whether a temple is a private property or not, it is certainly not public property, in the sense that when you enter a temple, you cannot enter there as a matter of right. It is a privilege, and there is a reason for it. You can practice your faith in the private confines of your home, whichever way you want to. If you choose to establish a temple of your own, even that could offend sentiments, because if it goes against tradition, people have a right to object to it. But you're going a step further, which is to say that I will enter the place of worship of a certain community, and I will impose my individual will on that particular institution at the expense of everybody else's sentiments. The Constitution is crystal clear on this. All fundamental rights are subject to the rights of other people, particularly when it comes to religious institutions. Your right as a believer is subject to the right of the institution and the right of the believer. That's it. यही नहीं, अभी और सुनिए. There is no jurisdiction in the world, and I repeat, there is no jurisdiction in the world, no civilized country in the world, not even the United States, which allows the judiciary to sit in judgment of a religious practice independent of state action. Okay? So the first thing that I'm telling myself, so what are the broad points? One, the right of an individual when it comes to a public place of worship is necessarily subservient to the rights of the believers. आप घर में बैठ के जब आप मूवी देख रहे हैं, आप अपने सर पे पॉपकॉर्न डाल लीजिए, किसी और के सर पे पॉपकॉर्न डाल लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन अगर आप सिनेमा थिएटर जाएंगे तो आप पब्लिक जगह पे जा रहे हैं, तो जिन्होंने पैसा दिया है उस मूवी को देखने के लिए, आप उनके राइट्स को भी रेस्पेक्ट करेंगे. एज सिंपल एज दैट. मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं की भी वेदना है. आपका सिर्फ वेद ही नहीं है वहां पे, और सिर्फ वेद पढ़ना आसान है. अगर आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया ना, तो समझो ईश्वर को पा लिया. इसलिए महिलाओं की वेदना को पहले पढ़ना चाहिए. आपने कहा कि वेदना को पढ़ना ज़्यादा बेहतर है वेदों को पढ़ने से. सो इन लाखों जो महिलाएं थीं, उनकी वेदना का क्या, जिन्होंने कहा कि मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए और जो सड़कों पे थी विरोध कर रही थी. 1 मिनट. आप क्या कहना चाहती हैं कि कुरान गलत है जब वो कहती है कि औरतों को कैसे ड्रेस होना चाहिए? कुरान गलत है? नहीं, कुरान गलत नहीं है. अब क्या हो जाता है? कुरान गलत नहीं है, लेकिन अब सडनली क्या हो जाता है? सारा प्रोग्रेसिवनेस कहाँ चला जाता है आपका? नहीं, सुनिए, बोलिए. ये देखिए, कुरान के कुछ सारी हिम्मत कहाँ गई? मैं सवाल को आपसे पूछता हूँ. हमारे पुराण के नियम है, उसमें बदलाव लाना चाहिए. उसमें बदलाव लाना चाहिए. उसमें अपने आप बदलाव आएगा. हजारों. मैं आपसे कह रहा हूं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि एक भी शब्द, एक भी चीज इट इज ऑल इनवायलेबल. आप चेंज नहीं कर सकते. अभी मैंने आपको 3 कुरानिक वर्सेस बताई हैं जो कि माइन्यूटली कह रहा है कि हाउ शुड वीमेन ड्रेस. Why don't you say it is wrong? नहीं, लेकिन उसमें जो है वो बदलाव आना चाहिए, और इसीलिए it is so easy to expose the hypocrite. गजब बेइज्जती है. First of all, I would like to congratulate Tripti Desai for having shown the courage to say on this stage that the Quran needs reformation. दूसरी बात ये बोल रही हैं कि मंदिर पब्लिक प्लेस है. वैसे तो रेलवे स्टेशन भी पब्लिक प्लेस है. कोई भी जा सकता है क्या विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट अंदर?
उनके भी कोई रूल्स हैं, हर चीज़ के हर जगह पे कोई रूल्स है। और ये बात जो मैं कह रही हूँ कि हिंदू जो बिलीवर हिंदू है वो मानता है कि मंदिर का जो डेटी है, मंदिर के जो भगवान हैं वो हमारी तरह जीवित हैं। इसीलिए हमारे मंदिरों में भगवान सुबह उठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर उनको भोग चढ़ता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात ये बोल रही है कि जो मिलियंस ऑफ विमेन जो जाना चाहती है, कौन जाना चाहता है? रेहाना फातिमा, बिंदु जो लाखों कम्युनिस्ट है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जो दो लोगों ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया है वो एक बिंदु है, एक रेहाना फातिमा है, बस वो जाना चाहती हैं। और वो जाना चाहती हैं, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आए थे कि यूज सैनिटरी नैपकिन लेके गई, तो मंदिर जाना चाहती हैं कि मंदिर को डिसेक्रेट करना चाहती हैं? आप सोच के बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। Do you know how many women come to Shabarimala every year? Every year, almost 5 to 6 lakh women visit Shabarimala. There is only an age regulation. The first person to be arrested from Shabarimala was my 84-year-old grandmother, and they cleverly hide all these things. And only one thing I have to say, because the time is running up. The leftist government, with all their, Kerala is ruled by CPM, with all their power and with 10,000 policemen, tried for 66 days. And we believers, do you know what we said? If you have to intrude and invade Shabarimala, you will have to step on our chest before you are intruding our temple. And we resisted it for 66 days. We will resist these feminists, these left liberals, even in future too, because this matter goes to the very core of Hindu faith, the Tantric system and the Vedic system, because that Hindu faith has to be protected. Temple is a private space of the deity and the devotee for public worship. That private character they want to intrude and they want to defile. And just concluding line. And who is Rehana Fatima? Rehana Fatima belongs to a Muslim community and is a left liberal. When the verdict come, one fine morning she became a Ayyappa devotee. Right now, I want to see Ayyappa. I want to see Ayyappa. I want to see Ayyappa. I believe in Hindu-Muslim bhai, with due respect. There are thousands of mosques across India which has regulation to all the women. Here in one temple, you have an age regulation. Suddenly, Constitution fell down. India ka Supreme Court fell down. Suddenly, Article 14 fell down. See, this is the hypocrisy and duplicity that they have towards Hindu community, because they want to guilt trap us into something. They want to always point out that you are wrong. You are basically arguing the same left-wing argument in a more sophisticated language, maybe? See, I don't wish to get into the left versus right debate because I don't see myself as part of the right wing. I see myself as part of the Indic wing. I don't believe that there is a concept of right wing in India. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Second, let me be blunt. The fundamental issue has been the inability to strike a distinction between diversity and discrimination, between uniformity and equality, between pluralism and standardization. I have seen over the course of this debate and several debates repeated references to untouchability, to sati and whatnot. There is only one temple dedicated to a specific deity who happens to be a brahmachari, and in that particular place there is a restriction for a particular age group, not because of menstruation but because he is a brahmachari. And we are being told that that practice needs to be necessarily compared with untouchability, that needs to be compared with sati pratha, that needs to be compared with widow remarriage. Where is the sense of proportion in this debate? No, Second, I'd like to add something. I'll have to finish my point. I'm not yet done, ma'am, and I've been silent all along. It doesn't make a difference if India is a secular country or not. You know why? Because a place of worship is not a secular place. By definition, it is a religious place. Okay? So please do not apply secular logic to religious places, because you will not tolerate application of religious logic to secular places. Okay? Okay, my only... I'm not done. Please, hold on. Anybody, I challenge members of this audience, because you happen to be a citizen of this country, can you just get into the Supreme Court and say that I will practice in the Supreme Court without having the necessary qualification, without following the necessary rules? Because then your argument is going to be, no, but when the Supreme Court comes out with rules, these rules are meant for everyone, there are not separate rules. Fantastic. Then why don't you recognize the fact that when it comes to the Hindu faith, it believes in diversity of spaces. There are specific spaces which are dedicated to a specific form of energy, and there are specific spaces which are open to everyone. If this particular faith's diversity is finished through the weaponized form of equality, which is nothing but standardization, I'm sorry to say it will result in unwarranted Abrahamization of the Hindu faith, and it will lose its originality, which I think is against the concept of Article 25 and 26. I'll just make one final point.
it's always possible to muddle the entire argument and muddle the entire issue by comparing it with something very, very bad or terrible. Nobody has been able to ask, or let's say answer the specific question. When you say that this temple does not allow women and it has a problem with women, it is based on misogyny, it's based on patriarchy, I want to ask each of these people, what do you know about the temple before you have made that comment? What have you read before you have made that comment? Are you saying that you know better than centuries of people who have actually worshipped at the temple and who have practiced that particular faith? Unless and until you have a specific position, kindly don't make yourself the representative of the entire female community. You're not. Second, you can't speak on behalf of believers. You can't speak on behalf of the deity. You can't speak on behalf of the temple. To put it in the language of Game of Thrones, you know nothing, Jon Snow. तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म। तो अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने राय क्या है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,